Hi, good morning. Well, okay, afternoon, yeah. 1 बज रहा है. Oh, Ionic equilibrium. आज हम लोग बात करने वाले हैं इसकी. Now, a lot of you been waiting for this session. एक suggestion है मेरा, and please इसको seriously लीजिए. I know usually your goal is to solve the maximum number of questions quickly, but यहाँ पे आप कोशिश करिए कि first principle से चीजें हम लोग करें. And trust me, this is going to benefit you a lot in the actual JEE exam. Hello to everybody on the chat. मेरी आवाज साफ आ रही है? Can you hear me and see me? Yeah. Oh, Shlok saying it's a week, something that he finds a little hard. Yuvraj, Rek, good evening, morning, afternoon. Good afternoon. Hello, hello. You like Ionic? I like Ionic. You like chemical bionic? A little difficult. Morning, yeah, sure. Anyway, so मेरा suggestion ये है, right? Don't depend on formulae on this one, okay? कुछ formulae है basic ones, but first principles, right? Because what I've seen increasingly is कि JEE main और advanced में ज़्यादा फर्क नहीं है when it comes to Ionic. Now that may be a good thing or it may be a scary thing. What am I trying to say is कि भाई mug vomit JEE main में शायद काम न करे. Okay, equation आप mug करोगे, but हो सकता है direct application नहीं होगा. So in the question that I have for you today, try your best to do from first principles. I know there's PH for वो जो equation होती है ना, Henderson-Hasselbalch equation होती है, फिर वो हाइड्रोलिसिस इक्वेशन होती है, वो सब आप डिराइव कर सकते हैं. एंड मैंने आप सवाल ऐसे बनाए हैं कि यू कैन गेट द क्वेश्चन आराम से अगर आप डिराइव करें. तो ट्राई डूइंग दैट. दैट वाज द फर्स्ट थिंग आई वांटेड टू पॉइंट आउट फॉर टुडेस सेशन. द सेकंड थिंग व्हिच इज आल्सो रियली इंपॉर्टेंट is because a lot of you have been asking a mock test. Good afternoon, Sanket, Pranam. Sanket, you'll be good, bro. We've got you sorted. Just come. मेरे से पढ़ते जाइए. आकाश भाई उस पे physical will be like top. Mahendra Singh Dhoni sahab, hello. So we are here, right? 4th Jan, equilibrium, etc., etc. I don't know if you guys saw this or not. Yesterday we did a session. This is the, what do you call it? Crux of that session. JEE, Jeet ki tayari, right? No, wait. Jeet, JEE ki tayari. This is what we are calling the whole thing. These are paid sessions on the app. You can check them out. Description, the link, you can check it out. I'll give you this on the Telegram channel. You can, go through all the stuff. I won't spend too much time on this. The goal is every day we'll meet for 1.5 hours, Monday to Friday, yeah, from 15th to 19th Jan. And what are we going to do? We're going to talk about JEE, right? I'll do physical chemistry sessions, inorganic ones. Nitika is going to do organic sessions. And why are we doing it on the app? Why is it paid? Because you get access to the entire app for the period of the, jab tak aap aise product hai. So yeah, check it out if you want. Live interaction, you can turn on a video, chat with us, whatever. Oh, by the way, आपको चाहिए था mock test and that's also coming up. Hold on. For this part, I'll move to the other side. हम हैं यहाँ पे, हम जाते हैं दूसरी तरफ. कहाँ गए हम? हम हैं यहाँ. चलते हैं उस तरफ. Okay, yeah, look at this. So mock test, that's happening on 7th Jan. This is something you really wanted, okay? And this is completely free, okay? So please, इसका मैं आपको लिंक दे देता हूँ. You can register right now if you haven't already registered. भाई क्यों नहीं register किया है? Free में best चीज तुमको मिल रही है आकाश. बायजूस के best teachers literally that we have, not just the teachers, everybody, top faculty जो है उन लोगों ने सब बनाया है. Register भाई, अगर आप अभी दे रहे हो तो what are you waiting for? So you know how it is, right? This is like the largest mock test that is ever held. You have like more than 10,000 students writing it all the time. 11th students हो, 12th के हो, फिर से दे ही दे रहे हो, कितनी बार दे रहे हो, check it out. So 7th Jan को है, okay? And what are we going to do? We're going to discuss solutions also sometime over here, the week right after, right? तो हम लोग आपके पास रिजल्ट्स आ जाएंगे by the next week. 7th is Sunday, this Sunday, okay? पेपर है JEE का, तो आपको you already know 24th को है, but उससे पहले लास्ट आपको एक मॉक टेस्ट, the mock test that you need to give is this. It's completely free. Results come out on the 9th. We'll do a live paper discussion right after it. ठीक है, हम लोग करेंगे. Stay tuned for that. Very soon after the 9th, we'll do this. What are the top highlights? Top highlights आपके सामने हैं. You will get a very cool percentile, which is going to be very close to your actual rank. Now, what is different here and from everything else is we've been doing this for a long time. Yeah. So maybe around 10-20,000 students लिखेंगे, but we're going to predict it like simulated, like around 10 lakh students लिख रहे हैं, which is actually a larger number, right? You have like 14 lakh students who have registered already. We'll do analysis, and the goal is to give you the exact experience as a JEE main exam itself. Top 50 students get a complimentary ranker series, etc. And if you haven't already registered, कर लो. चलो शुरू करते हैं आज का session. You can attempt any time on the 7th. You just have to like sign in, and this is a free thing. All right. सब लोग बहुत शांत हो गए. Is this because I'm talking about something that is promotional stuff and not really content? I can't understand if you guys are with me or not. This is completely free, okay? शुरुआत में I told you about the paid course.
This one is completely free. Anyway, we're going to go back to, hold on. Oops. Oops. Okay, I can't tell if the chat is, can you just like say hi in the chat to see if it's working or not? I think the chat is kind of hung on my side. Hold on, I'm just going to reopen chat. 1 second. Oh yeah, the chat did hang. I'm just opening it up again. Sorry about that. This happens at times. I don't know. ये browser पे बार-बार ये होता है ये. On my phone, the chat is fine, but on this browser, it keeps conking out. Anyway, now the chat seems to be working okay. Thank you so much for your responses there. All right, you're here. All right. Yeah, it's a free mock. Why not? You know, कर लो. Let's start with today's session. What's the goal? You know the drill, right? हम लोग खोलेंगे NCERT. This is a link to everything I've generally been doing. I keep showing you this when we start our sessions, right? So here you go. Every session that I've ever done and will do in the future is going to be on this. Equilibrium. What are we talking about? Ionic equilibrium. जैसे मैंने आपको बोला था, आप फॉर्मूले से मत डरिए इसमें. Okay. The goal here is a lot more than just mugging a few formulae. Okay. That is something I wanted to take away from it. That's the main takeaway from our session. Let me get to the ionic part. The basics are जो theories थी यार, you have different forms of Arrhenius equation है, Arrhenius भाई साहब की theory of acid and bases, Lewis भाई साहब की theory of acid and bases, और एक और था ना, Laurie Bronsted, that one's the most important one. Why is it the most important one? Because इसी के basis पे पूरा जो organic chemistry है, इसी पे based है. Okay, what do I mean? The idea of Ka or pKa of, you know, with whether some reaction is going to happen or not. Like in organic chemistry, you see ki, acha, if I have say A and B, is the reaction going to happen or not? Well, if it forms weaker bases and acids, tab form hoga. Otherwise, it will not happen. And I realize now that I'm on the other, still on the other side, I'm going to move myself back to my usual position. Ek second, give me a second. Oops. Not this. This one. Yeah, let's move this guy right here. OBS is fun, isn't it? Ruko. It's moving literally like a snail. Hold on. I'm going to turn myself off and move myself to the other side. Oh, God. Why is this being so difficult today? Hold on. Okay, what I'm trying to do is just move myself to the other side. And you know how tech is, right? When you need it to work is when it starts to behave weird. So we're going to just chat about something for the next 10 seconds while I move myself very slowly to the other side. Yeah, thanks, Yuvraj. Exactly. The JEE thing is paid. It's a 1-week course. You have access to everything. And the mock test is completely free. Yeah. Hold on. We're still moving across. It's like a snail pace. You want to see how slowly it moves? It's really funny. Hold on. When I'm trying to move it to the other side, look at that. It's almost like you can't see it moving at all, right? I'm doing this and we're still waiting on me to move to the other side. We'll do that. All right. So, what was I talking about? देखो, Bronsted-Lowry acid का concept है कि a difference of H plus ion. If a base is strong, उसका conjugate acid होगा weak and vice versa. And this is the basis of everything in organic chemistry, as Nitika will tell you as well. Now, I know आपको organic थोड़ी मुश्किल कुछ लोगों को लगती है. And that's because you guys try and mug reactions. Don't mug reactions. Try and figure out our reaction mechanism. उसी से तो आप लोग figure out करोगे कैसी चीज होती है. खैर, all of this idea of pKa and pKb is going to be directly applicable in organic chemistry. So, besides that, और कहाँ पे देखो यही चीज मैं बोल रहा था ना कि if you have this guy here, yeah, अगर एक चीज weak है तो उसका जो है conjugate acid strong होगा, etc. etc. Let me give you a simple example here, right? If you have HCl, now this guy is going to give me H plus and Cl minus. Now, out of this, what do you think? This is a strong acid, right? Which means this must be a very, 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 very weak base. And that's exactly the case. Yeah. That's why ये भाई साहब नहीं hydrolyze करेंगे. So Cl minus plus H2O giving you back HCl is probably not going to happen. Yeah. This is not going to happen. How do you know this? Because of this concept of weaker acid and a weaker base being formed. यहाँ पे stronger acid बन रहा है. It's not going to happen. It's not going to happen. All right. Yeah, I'm moonwalking the screen. I know it was really, really, really funny, but dramatic effects, etc. Anyway, the next idea that's important is Lewis acid and base का ये भी organic में बहुत useful होगा. I'm going to skip over to the parts that is, you know, JEE specific, JEE के लिए जरूरी है, which is the concept of pH. You know all this, right? pH आप 10th grade में कर चुके हो. KW है, etc. etc. ठीक है. एक चीज जो कभी पुराने पहले जीए में पूछा, आजकल नहीं पूछा गया, पहले पूछा जाया करता था, इसकी अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, से 300 केल्विन के बाद मैं 400 केल्विन कर दिया, नाउ एट दैट पॉइंट व्हाट हैपेंस टू द वैल्यू ऑफ के? एक सवाल है, बिकॉज ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, के की वैल्यू बन जाएगी, कौन सा रिएक्शन? ये, यू नो, H2O गिविंग मी
H plus and OH minus. This is an endothermic reaction. मतलब कि अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो Ka की वैल्यू बढ़ जाएगी. Now that does not mean that the solution is still not neutral. Neutrality is decided by the balance of H plus and OH minus ions. अगर ये दोनों balanced हैं, then it's still going to be neutral, which means कि ये is the concentrations will change. It won't be 10 power minus 7 anymore. It will be something higher. So if the pH is 6 of both, say OH minus and H plus ions, it is still neutral क्योंकि दोनों concentration same है. ठीक है? इस चीज this thing has been tested in the previous JEE papers. Who knows? Probably फिर से भी आ सकती है. This is what I was talking about, the concept of Ka, pKa, etc., etc. And you can see right here, the phenol is not that strong an acid, yeah, as compared to HF. In fact, even HF is a weak acid as compared to HI. और वो चीज आती है यहाँ पे. Okay, वो कहाँ गया? Where did that part go? I think that was in the last time, right? Where we did, yeah, that was in the last session. We were looking at chemical equilibria. Yeah, we were doing it there. Khair, you can ionize acids and bases, but be careful when you are trying to ionize bases. What you get is POH and not pH. So how do you get pH from this? Well, 14 minus pH is POH, right? So this is the relationship that you need to keep in mind, okay? To when you're calculating stuff. So इस case में जब आप लोग C alpha निकाल रहे हो, which is the concentration of OH minus ions, be careful. Don't report that as a pH because numerical entry सवाल इससे आ चुके हैं in the past. Just like you have Kb values, you can get pKb values which are negative log of Kb. The next idea that I feel that's stupidly important is relationship between Ka and Kb, but only for conjugate acid-base pairs. What do I mean by conjugate acid-base pairs? They differ by H plus. मैंने एक example दिया था, like Cl minus and HCl. Like this is an example, not a very relevant example. A better example is maybe something like this: NH3 and NH4 plus, right? These are conjugate base pairs. Or NH3 and NH2 minus. These are also conjugate acid-base pairs. This is pair 1, this is pair 2. इन दोनों के बीच में Ka और Kb का रिलेशनशिप बना सकते हो in the sense that pKa plus pKb is 14. Now this only and only works for conjugate acid-base pair. Please ऐसे ही इसको randomly कहीं पे अप्लाई मत कर देना. You hate buffer वाले question. युवराज, I will teach you this in such a way in 5 minutes कि you will do it in your sleep. इतना आसान है बफर वाली चीज. आगे है polarity and electronegativity. Thank you Shlok. Thank you Shlok. These questions enough for mains. धोनी को क्या डर है सवाल का? You're supposed to hit those helicopter shots. कहाँ का डर के आगे जीत है. yeah, I'm not going to stop promoting that. Khair, if you're going to work on, if you get any questions on di and polybasic acids, again, no formula required. Please don't mug stuff. Do things from first principles. Okay. पहली चीज and most important thing is हमेशा, and this is always true, K1 will be greater than K2 will be much greater than K3. Look at this. Look at the difference in values for H3PO4. This is supposed to be a decently strong acid. pK1 is strong. 2 is ridiculously weak and 3 is laughable. 10 power minus 13. ठीक है? I'm not expecting you to remember any of these numbers, but get a feel for them. Understand कि इसका implication क्या है. मतलब कि if I do an acid-base reaction, तब ये reaction आगे चला जाएगा. But if I put it in solution, बहुत likely है कि सिर्फ एक ही H plus देगा, दूसरा तीसरा तो practically नहीं ही देगा, अपने आप से नहीं देगा phosphoric acid. Do you follow? Do you follow what I mean by phosphoric acid? पानी में डालो तो पहला वाला तो निकल जाएगा, दूसरा तीसरा लगेगा नहीं निकलेगा. But if I do an acid-base reaction, then it will show the property कि चलो तीनों दे ही देते हैं यार, बेस इतना मांग रहा है तो extract कर ही लेगा proton. That these are two different things. What do I mean by base extract कर लेगा? We'll see using a question. And Shlok was absolutely right. This is right here. Tejas, what do you mean? ये product क्या दिखा रहा है? Yeah, that's the paid product. Tejas, maybe you missed yesterday's session. We are doing, Jan 15 to 19. We are doing stuff. Yeah, we will talk about that later. Let's focus on this. Let's focus on अभी क्या कर रहे हैं. So, like I was saying, HI is a much stronger acid as compared to HF. देखो, HF का pK is 10 power is pK is 3. HI का is something like maybe not 30, but I think it's 15 or something. 10 power minus 15 मतलब Ka is 10 power 15. Okay. For example, यहाँ पे देखो. Okay. कहाँ है HCl? HCl का Ka value is 10 power 7. मतलब it almost goes to completion. Okay. But what does it mean? We're putting actual numbers to this. ठीक है? Like Shlok was saying, there is a factor of electronegativity, and this could come as theory questions, maybe here or even in organic chemistry. Okay, I'm just leaving it over here as that. Last ideas are about common effect and KSP. उसके बारे में हम लोग डिटेल में सवाल करेंगे. I think let's start with questions. Shall we start with questions or what? Shall we start with questions or do you want me to go through some more theory? The last bit of theory I feel जो जरूरी है,
कॉमन आयन इफेक्ट से क्या होता है कि देखो कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है अगर आयन कॉमन होता है। देखो इन दोनों के बीच में CH3CO माइनस CH में कॉमन आयन ये है CH3CO माइनस, राइट, बिकॉज दिस डिसोसिएट्स टू गिव A माइनस प्लस H प्लस, और ये क्या है, दिस इज A माइनस, सो इट सप्रेसेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द H प्लस आयंस, बट इन द प्रोसेस इट ऑल्सो फॉर्म्स अ बफर। युवराज तेरे को डर लग रहा था बफर से, यही तो है बफर। common ion effect क्या है, nothing else, is just a buffer. Okay, using common ion effect you can explain buffer, and using common ion effect you can say कि अच्छा I can also affect the solubility of different ions, and that is what is there in the whole of salt analysis. ठीक है, अब ये हाइड्रोलिसिस अलग से इन लोगों ने पढ़ा दिया, but it's not a big deal. I'll show you all of this on just one graph. एक ग्राफ में सब पार्ट्स होंगे. We'll take literally 30 seconds to talk about this. Okay, if I take volume of say HCl added on this axis and I have मेरे बीकर में NH4OH, ठीक है, एंड pH है यहां पे इधर, तो दिस इज गोना लुक समथिंग लाइक दिस, ओके, फॉल एंड दिस, होल्ड ऑन, इसको ठीक से ड्रॉ नहीं किया, ओके, ऐसा कुछ दिखेगा. व्हाट डू आई मीन, व्हाट इज दिस गोइंग टू बी, दिस इज द पॉइंट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, मतलब यहां पे होगा NH4Cl. दिस इज अ सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, मतलब कि दिस pH is going to be less than 7, end point pH is going to be less than 7 may be somewhere over here, ठीक है. और ये है आपका बफर सॉल्यूशन. कैसे हो गया बफर, बिकॉज दिस हैज NH4OH एंड NH4 प्लस आयंस इन द फॉर्म ऑफ Cl, ये है, ठीक है. और यहां पे क्या है, यहां पे सिर्फ एसिड है, सिर्फ एसिड है. देखो यहां पे तुम्हारा HH इक्वेशन आ जाएगा, हेंडरसन हैसेलबैक इक्वेशन, यहां पे हाइड्रोलिसिस हो जाएगा बिकॉज यू हैव ओनली सॉल्ट, एंड यहां पे शुरुआत में होगा यू विल हैव दैट सिंपल थिंग वेयर यू गो वी डू Ka, और सॉरी इन दिस केस Kb is equal to C alpha square by 1 minus alpha. पूरा आयोनिक इक्विलिब्रियम एक ग्राफ में खत्म. आई टोल्ड यू 30 seconds, maybe I took a minute, but whoop, big whoop. You see that? You see that? Thank you, Tejas. NH4Cl pH is less than 7. Why, Tejas? Because it is a salt of a strong acid and a weak base. Figure out कि उसका जो है origin story क्या है, जैसे कि किसी हीरो या विलेन की origin story होती है, वैसे ही यहाँ figure out करना है. एक ग्राफ, guys, just this one graph completes the whole of ionic equilibrium. Okay? आपको कभी डर नहीं लगेगा, इट्स वेरी वेरी डूएबल. यस सर क्वेश्चंस, यस सर क्वेश्चंस, ओके, वी विल डू क्वेश्चंस. लेट मी क्विकली सी. हाँ, यहीं पे मैंने वही सेम चीज फिर से लिखी है. सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का आइडिया है KSP का, यू विल फिगर इट आउट. KSP कहां पे जरूरी होता है, कैटायन सॉल्ट एनालिसिस में. एंड ब्रो, दिस इज व्हाटएवर आई एम टेलिंग यू वर्क्स फॉर JEE एडवांस, नॉट जस्ट फॉर JEE मेन. ओके, डरावने नहीं बोल रहा हूं. And especially for thing like this, please don't mug. It's a massive waste of time to mug anything in ionic equilibrium. You can quote me anywhere on this. Anybody who's mugging ionic equilibrium is doing it a great disservice, because I wouldn't like it. I'm telling you my personal view. I would hate a subject जहाँ तुमको mug करना पड़े. And ionic equilibrium is something I really, really like. So you must know कि कुछ mug नहीं करना है. पहला सवाल बहुत आसान one to start off with. Which of the following species is a Lewis acid? Lewis acid निकालना है यहाँ से. That's cool, right? Exactly, Yuvraj. Exactly. That's what I'm saying. It's very easy to do. पढ़ाई करनी पड़ेगी. ऐसा नहीं कि अब बिना पढ़े आयोनिक हो जाएगा. But you've got to see it from a point of view where you figure everything out. And it's possible in ionic. It forms a beautiful story. We'll talk about that as we do questions. Yes, Tejas, oxalic is a weak acid. Sure. स्कूल में बता रहे थे, प्रैक्टिकल में. हाँ बिल्कुल तेजस, सही बोला आपने. Are you sure? सिर्फ A? What about the rest, guys? सारे ऑप्शंस पढ़ तो लो. अरे A and D, Shlok, good. Shlok is closer to the answer than all of you. All of you are partially correct. Even Shlok is partially correct. Shlok is partially correct as well. Yuvraj also is partially correct. But good job everybody for giving me the answer. Sankit, Tejas, Mahendra Singh Dhoni sahab. Funny names, guys. Nikhil Dubey, Rek, Yuvraj, everybody giving very answers. Lewis acid which accepts electrons. Rather, Yuvraj, think of it like this. Think of it like this, Yuvraj. Lewis acid is something that is deficient in electrons. Whether it accepts or not, हमको नहीं मालूम. See, cause and effect के बारे में सोचो. Accept करेगा और कोई देने को तैयार हो, right? But it wants it. You're talking about the species. I know it's the same thing, but you are focusing on what is the Lewis acid. Lewis acid is something that wants electrons because it is deficient in them. Whether it accepts or not, that we don't know. That depends. That depends on something else. कोई देने को तैयार है तब तो लेगा. But right now, what does it do? It wants it. So it is deficient in electrons. अब सोचो, A, C, and D. A, B, or D? Yuvraj, beautiful. Shlok, beautiful, amazing, well done.
वेल डन, ए बी एंड डी बिल्कुल सही है। तेजस एंड महेंद्र साहब, धोनी जी कैसे कर दिया आपने ये, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो दिस इज अ लुईस बेस, राइट? सो द आंसर इज गोइंग टू बी ए बी एंड डी। कूल, excellent Rek, Yuvraj and Shlok for figuring out सबसे पहले. I hope everybody else also has understood this. Let's go on to the next question. हम लोग rapid fire mode में हैं अभी, मजा आएगा. 10 ml of M by 100. Yes, absolutely dangerous भाई साहब, dangerous. Michael Jackson का गाना. 10 ml of M by 100 H2SO4 solution is mixed with 20 ml of M by 100 H2SO4 solution. Find the pH of the resulting solution. मैंने कुछ दिया नहीं, मतलब न्यूमेरिकल एंट्री समझ लो. Do you need log or something क्या इसमें? देखते हैं, लॉग की जरूरत है इसमें, ठीक है बता ही देते हैं, लिख देता हूं यहां पे, log 2 is 0.3, log 3 is 0.5, log 7 is, बोल रहा हूं क्या था log 7, आई थिंक log 7 क्या था, एक मिनट, याद नहीं है, और should I mix something up, log 5 7 नहीं, सॉरी, हाँ गलत, log 5 is 0.7, हाँ वही, हियर ये ले लो, ट्राई करो सर। ये जब मेंस में आया था तब उसमें लुईस बेस पूछा था, युवराज ने पकड़ लिया। यस युवराज, दैट्स एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। तेजस ठीक है बोल दूंगा, इस बार नहीं बोला तो अगली बार बोल दूंगा, ठीक है। एज लग गया महेंद्र, डोंट वरी धोनी साहब। अब तो प्रैक्टिस हो गई ना बैटिंग की, चलो। सो दैट्स अ इंटरेस्टिंग थिंग दैट महेंद्र सिंह धोनी जी सेड, यू नो, लर्न हाउ टू लीव द गुड डिलीवरीज। सो अगर अच्छा सवाल है तो यार, और whatever नहीं समझ में आ रहा है, leave the question, skip is fine. Rek says 1.7, wonderful, thank you Rek. Jat Saab is saying 0.69. यार how are you getting 0.69? मैंने वैसे नंबर दिया ही नहीं तुम लोग को, I am giving you these three values, how are you getting a second decimal, कहाँ से आ रहा है आपका? बट ठीक है, आपसे कैलकुलेटर से किए। श्लोक is saying 3.5, ठीक है। Three guys, three options. Do you want me to wait or shall we go ahead and solve it? देखो करना क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, प्रोसेस सिंपल है ना। H प्लस इज 1 प्लस 2, दोनों को ऐड करो। क्या ऐड करना है? मोल्स, टोटल मोल्स बाय टोटल वॉल्यूम। ओके, द वे टू डू दिस इज मोल्स को अलग से ऐड करो, वॉल्यूम को अलग से ऐड करो, दिस इज ऑल यू गोट डू। मैं आपसे बहुत विनती करता हूं कि कोई रैंडम फॉर्मूला मत करिए, अगर आप करना चाहते हैं करिए, बट आई एम टेलिंग यू कैन डू इट विदाउट ऑल दैट एज ऑलवेज। सो मोल्स क्या है? 10 into 10 power minus 2 into 2, क्योंकि ये H2SO4, सिमिलरली 20 into 10 power minus 2 into 2, बिकॉज यहाँ पे H2SO4 फिर से। डिनोमिनेटर क्या है? 10 plus 20, क्योंकि दिस इज द वॉल्यूम इन ml, इसलिए यहाँ पे है 10 power minus 3, ठीक है। सो यूनिट्स आर मोल पर लीटर। अब इसको 10 plus 4 ऐड करूं तो ये हो जाएगा 6, राइट? विल डू द 10 power व्हाटएवर बाद में करेंगे। 6 यहाँ पे हो गया 3, तो 6/3 है, यहाँ पे 10 power minus 3 आ गया, और ये हो गया 10 power minus 1, इज दैट करेक्ट? नहीं, 10 power minus 3 नहीं, 10 power minus 2 हो जाएगा, है ना? करेक्ट? 3.2, 3.5, 3.5, ठीक है, कूल, देखते हैं, लेट्स सी 3 कैसे आ जाएगा यार। ठीक है, विल सी हाउ डू गेटिंग 3, समझा नहीं। तो इधर मुझे लग रहा है कि 20 आ रहा है, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन 20 नहीं आया आपका। इज दिस 20 इनकरेक्ट? log 20 क्या होगा? log 20 विल बी log 10 plus log 2, which is 1.3, है ना? पता नहीं, I don't know. Did I make an error here? If yes, tell me, I'll fix it. But इसमें कुछ गड़बड़ लगा गया? What I did here, is there anything that I missed out on? Please tell me, I'll fix it. अगर हमसे कुछ गड़बड़ी हुई है तो no tension. सिली मिस्टेक किससे हुआ श्लोक जी, हमसे या आपसे? 3.5 आप लोग, बहुत लोग बोल रहे हैं, ओके, 3.2, 3.5। देखो, मैं आपको शुरुआत में मैंने एक एडवाइस दिया था, एंड दैट विल हेल्प यू डू क्वेश्चन लाइक दिस। फर्स्ट प्रिंसिपल से करिए। जाट, आर यू श्योर 1.3? एक बात, 3.5 कैसे आया था? लॉट ऑफ यू गेटिंग 3.5 ना, कैन यू टेल मी व्हाट वाज इट यू डिड टू गेट 3.5? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। 3.5 वो एक्सपोनेंट एक्स्ट्रा हो गया था क्या? log 200 होगा क्या? log 200 भी हो गया, तब भी 3 नहीं आएगा यार। 3 आने के लिए 1000 आना पड़ेगा। 3.5 कैसे यार, क्या किया आप लोगों ने? लॉग का लोचा है, अच्छा, दोनों से। सर मैंने वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दिया था, युवराज भाई साहब, वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दिया था। अच्छा, वॉल्यूम क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? शुरुआत में तो वॉल्यूम मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मोल्स के लिए आई हैव टू डू m into v,
यही मैंने यहां पे किया है, दैट इज फाइन, देयर मल्टीप्लाइंग वॉल्यूम इज फाइन। देखो ये है वॉल्यूम, लेट मी राइट ml, वॉल्यूम इतना कौन लिखेगा, ये ml है और ये है मोल, सिमिलरली ये है ml, ये है मोल, राइट, दैट इज व्हाट आई हैव डन ओवर हियर, करेक्ट, रादर दिस इज मोल पर लीटर, नॉट मोल, दिस मोल पर लीटर, मोलैरिटी है। मिली मोल्स है सर ये 20, अच्छा मिली मोल्स है ये, कैसे मिली मोल्स है, मिली मोल्स 20 कैसे है श्लोक, नो सर वॉल्यूम से डिवाइड नहीं किया था आई थिंक, ओ मिली मोल है ये 20, नंबर ऑफ मोल्स के लिए सर वॉल्यूम और मोल्स ऐड करेंगे ना, वॉल्यूम और मोल्स ऐड करेंगे, हाँ तेजस वही तो किया है मैंने मोल्स ऐड किए हैं, फिर डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऐड किया है, टोटल मोल्स बाय टोटल वॉल्यूम, राइट, और उसके बाद टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करना रह गया, ओ टोटल मोल्स डिवाइड करना रह गया, अच्छा, ओ सो यू डिड, अच्छा सो यू गाइस डिड जस्ट मोल्स, वॉल्यूम से डिवाइड करना भूल गए, अगर वैसा करोगे तब आएगा 6 इंटू 10⁻², नहीं तब भी नहीं समझ आ रहा है क्या कर रहे हो तुम लोग, ठीक है कूल व्हाटएवर, क्योंकि ml है 20 मिलीमोल्स का कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है क्योंकि ml है, ओके, बट ml का मैंने यहां पे लिख दिया ना 10⁻³ डजंट इट वर्क, ओके लेट्स बैक अप अ बिट, इज दिस ओके और इज दिस, इसमें अभी भी कुछ गड़बड़ी लग रही है, व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर दिस नंबर 20, इज देयर समथिंग दैट नीड्स टू बी फिक्स्ड हियर, आई अंडरस्टैंड आप लोगों ने क्या किया, somebody did millimole, something did this, somebody did that, but is this final thing okay, this H plus ion concentration 20 doesn't seem right, does it, it's 20 millimole, okay cool, yes, per liter, that's what you're saying, ah right, thank you, that's a very very good thing you guys have said, yes ये मिलीलीटर है, yes ये ऊपर भी तो करना पड़ेगा 10⁻³ का फैक्टर, बिल्कुल सही, तो ये 10⁻³ की जरूरत नहीं है, अगर इसको लिखेंगे आई ऑल्सो हैव टू राइट इनटू 10⁻³ यहां पे, परफेक्ट, थैंक यू सो मच गाइस, सो इट्स गोइंग टू बी 20 इंटू 10⁻³ एग्जैक्टली, अगर एक जगह करेंगे दूसरी जगह भी करना पड़ेगा, एक्सलेंट स्टफ, सो नाउ इट विल बी 3 माइनस, लेट्स डू इट दिस वे, नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻³ negative log of 20. So this is going to be 3 minus 1, that's 2 minus 0.3, which is 1.7. 1.7? 6 into 10⁻⁴. Okay. अब बराबर हुआ तेजस, yes, thank you. हाँ बिल्कुल सही बोला, thank you तेजस. So what is your answer finally? Answer क्या है? Perfect. Good. Excellent. Thank you for catching stuff. You guys are awesome. So what is the answer going to be according to you now? To make life easy, I think I'll just remove the 10⁻³ denominator, right? That I think will be better than doing it like this, which means कि हम लोग इसको बस लिखते हैं like this, ठीक है? तो what you get is 2, एक second, let me fix this, okay, दोनों जगह लिख देते हैं for the sake of simplicity, which basically just gets cancelled out. Okay, sweet. So what's the answer, guys? 1.7. Awesome. ठीक है, गुड जॉब रेक, एक्सलेंट वर्क, जाट भाई साहब प्रणाम, युवराज, नील, गुड, आगे बढ़ते हैं, गुड जॉब, नेक्स्ट क्वेश्चन, थैंक यू 1.7, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फॉर्मेट आयन HCO माइनस प्रेजेंट इन 0.1 मोलर, अरे यार इसका मुझे तुम लोग को ऑप्शंस नहीं देने थे, बट ठीक है ऑप्शन आ गए हैं, कर लो, मेरा पॉइंट था टू गिव यू ऑल क्वेश्चंस जस्ट टू सॉल्व सब्जेक्टिवली विद एनीवे subjective question देने थे, the concentration of formed ions present in 0.1 molar formic acid is what at equilibrium, yes total volume से divide नहीं किया था, you are right, number of moles का ही pH निकाल दिया, और it's okay, it happens, मैंने भी गड़बड़ी कर दी ना, I did not multiply 10⁻⁻³, मैंने एक जगह किया दूसरे का नहीं किया, usually I do everything in ml, so I just gets cancelled out, yeah, good job Rek, excellent work, युवराज, नील, तेजस, everybody figured it out, धोनी साहब बोलते हैं B, बाकी लोग क्या लगता है?
जल्दी कर दिया आपने धोनी जी, बहुत जल्दी कर दिया. That's great. What about the rest of you? This is a monobasic acid. Initially ये है, इक्विलिब्रियम पे ये होगा, K will be this. अब क्या करें? B, दो लोग बोल रहे हैं B. Simple stuff, right? धीरू भाई, okay? This is how I want to do it, right? Assume that alpha is really small, 1 minus alpha is equal to 1. पर हमको निकालना क्या है? हमको चाहिए C alpha. Concentration of formate ion is formate मतलब A minus, right? CO minus is what I've written as A. So I need 0.1 times alpha. B for Bombay. Vintage Mahi is back. Yuvraj asking their calculators. So there are two ways to do this, Yuvraj. अगर formula लगा कर सकते हो या फिर first principles कर सकते हो. Either way it works out, right? So what I wanted to do is to do it from first principles, which I get alpha and in the end I'll multiply C alpha, right? So alpha I've got to be something like 410 power minus 2. C alpha is 410 power minus 3. तो आप लोगों को दो कैसे मिल रहा है? Did I make some error here? दो मिल रहा है आप लोगों को. A lot of you got B. Did I mess up somewhere? 16 का रूट तो 4 ही होता है ना. एक बात बताओ, how do you get 2 into 10 power minus 4? I thought you guys were confident, so I just went through the solutions. But do you want me to re-go through any of these bits? I haven't done anything fancy, right? इस बार I've just written, I could have, I think, in retrospect, C alpha लिख देता तो life और भी ज़्यादा आसान होती. ठीक है? Write this C into 1 minus alpha, C alpha, C alpha. अगर वैसा भी करोगे, so basically you will get C alpha square is equal to K, right? Alpha is equal to under root of K by C. यही तो मैंने किया है. ये और ये हटा के बन जाता है 16, which is 16 into 10 power minus 4. So alpha you get to be 4 into 10 power minus 2. If you got alpha to be 10 power minus 2, उसके बाद तो बस into 0.1 करना है, right? C कैसे है? तेजस A होगा ना? Bro. Okay, guys, back up here. What is the value of alpha? Alpha की वैल्यू क्या आ रही है आप लोगों को? और alpha कैलकुलेट नहीं किया. What do you guys do? Can you walk me through what you're doing? Shlok, thank you. I get that is the answer. Okay. Let me give you a bit of this thing. अगर आप इस सवाल को गूगल कर रहे हो ना, don't waste your time. I have changed the options. Don't Google the answers, guys. मेरे सेशन में वो कोई पॉइंट नहीं है. I change every question. I'm not lazy. Well, I am lazy, but I am not in this way. इस तरफ आप लोग के बेनिफिट के लिए I've changed some things. Okay. इसीलिए आप गूगल मत करो यार आंसर को if you're googling stuff. That's not going to help you. भाई, to me it is not important that you get the question right in the chat very quickly. To me it is important that you follow ये process. ठीक है? This is the easiest way to do it. If you have an easier way, teach me. I will teach the rest of you. Are you okay with the process, guys? Yeah, A is the answer according to me. But it's okay. अगर C भी है तो maybe हमने कुछ गड़बड़ी कर सकती है. We'll fix it. It's okay. The answer is not that important. Process wise ठीक आ रहा है. Sir, is 4 into 10 power minus 2. Oh, X is 4 into 10 power minus 2. So concentration is 0.x. Yeah, exactly, Yuvraj. That's what I thought as well. But Rec को लग रहा है C है. Rec बताओ जरा क्या हुआ? कुछ गड़बड़ी हो गई या फिर क्या हुआ? You take X, got it. Skip. Tejas. You're the man, Tejas. Well left, Tejas. But answer 3 बार बताने के बाद skip करना does not work. Okay. In the test, you have to skip it much sooner. Okay. अगर skip करना हो तो. But देखो, ये डरने वाली बात नहीं है. मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल सब किया, कुछ ज्यादा एफर्ट नहीं लगाया. दिस इज लाइक द लोएस्ट एफर्ट क्वेश्चन एवर गाइस. लिटरली मैंने वहां पे देखो के बनाया एंड देन आई पुट सी अल्फा, फाइंड आउट अल्फा, देन टू सी इनटू अल्फा, बस. इट्स ओके, नो प्रॉब्लम रेक, नो प्रॉब्लम. आगे बढ़ते हैं. देखो, आई अंडरस्टैंड पीपल आर स्केयर्ड ऑफ आयोनिक. आई एम ट्राइंग टू ड्राइव दैट फियर अवे. ओके, कवर ड्राइव दैट फियर अवे सिंस वी आर डूइंग धोनी साहब की बातें. ओह नो, दैट्स एनीवे. कंसीडर डाइप्रोटिक एसिड H2A. The dissociation constant for H2A and H minus are 10 power minus 6 and 10 power minus 13 respectively. Take the pH of 0.25 molar aqueous solution of H2A. It will be what? I have given you values of log 2, log 3 and log 5, which you may need. Depending on how you do it, I'll give you a hint. Depending on how you do it, you may need log 5 की value या फिर log 2 या log 3. आप तीनों की value use कर सकते हो.
अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करोगे तो अलग वैल्यू यूज करोगे, इफ यू डू इट अदर वे यू गेट डिफरेंट, बट आई गिवन यू एवरीथिंग, और किसी चीज की जरूरत नहीं है आपको, ट्राई इट आउट, ट्राई इट आउट। क्लासिक कोरिक कर्व ड्राइव, दैट्स गुड। कुमार भाई साहब, एब्सोल्युटली, आई मीन, ओ यू आर सेइंग कि भूमिका से बोले, श्योर डूड, कुमार जी आप भूमिका से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, उनका सेशन तो अभी है, इसके बाद ही शायद 3 बजे उनका सेशन है, कुमार जी आप उनसे बात कर लीजिए, वो फिगर आउट करेंगी फॉर श्योर। या लेट्स ट्राई दिस वन आउट। ये वाला भी वही करना है जो पहले किया था, बस स्टार्टिंग पॉइंट थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है। इफ यू गेट व्हाट दैट स्टार्टिंग पॉइंट इज, इट इज एक्सट्रीमली डायरेक्ट, दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना, इट्स मैकेनिकल, राइट, प्रोसेस बेस्ड है कंप्लीटली। इफ यू वांट दैट स्टार्टिंग पॉइंट लेट मी नो, इफ यू आर ट्राइंग इट आउट द क्वेश्चन एनीवे, ट्राई करो आप, ठीक है। तेजस स्किप, यार तेजस क्यों यार, चलो तेजस, बिकॉज तेजस ने स्किप बोला, मैं तेजस को एक हिंट देता हूं, तेजस ट्राई करोगे, ये है स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, दिस इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, राइट ओनली दिस इक्वेशन, यू डोंट नीड द सेकंड इक्वेशन, ठीक है। व्हाई एम आई सेइंग डू नॉट नीड द सेकंड इक्वेशन, बिकॉज लुक एट दिस ब्रो, 10 पावर -13 है, कोई फर्क नहीं पड़ता है उसका, लाइक मैं आपको हिंट दिया था, डाइप्रोटिक एसिड, व्हेन आई टोल्ड यू अबाउट फॉस्फोरिक एसिड, मैं बताया था पहला वाला ही H+ निकलेगा, दूसरा वाला प्रैक्टिकली नहीं निकलेगा इन सोल्यूशन, बिकॉज इट्स सो लो, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एडिंग द सेकंड वाले का इफेक्ट, पहले वाले से इट शुड बी ओके, इट शुड बी ओके, या दैट्स व्हाट यू कैन डू हियर, या करो करो तेजस, ट्राई करो, यूज ओनली दिस, यू डोंट नीड द सेकंड वन, it's going to give you a very weird answer if you do use both. Not a very, it's going to be pretty much the same, it's not going to matter so much. और if you feel you want to use both, ट्राई करो, दोनों यूज करके भी कर सकते हो, जैसा आप चाहो, मेरा हिंट ये है कि उसके बिना भी कर सकते हो, बट अगर आप साथ में भी करना चाहते हो तो करो, नो प्रॉब्लम, प्लीज गो अहेड, डू इट। श्लोक, लवली, ग्रेट दैट यू डिड इट दिस क्विक। आंसर क्या है देखना पड़ेगा, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, तो आंसर देखना पड़ेगा, बट श्योर, थैंक यू फॉर द क्विक 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 working. So what did you do from here? Same thing, right? You write the equilibrium expression, write the initial moles and all of that, right? Write the final moles is k of this is simply going to be this C alpha square, yahi hai, yeah. I assume that C into 1 minus alpha is almost equal to, you know, C itself, वही सब चीजें हम लोग कर रहे हैं, but I don't do that now. See, I am going directly to find C alpha now because I need that. In the last question मैंने अलग टाइप से किया, इस क्वेश्चन में अलग टाइप से कर रहा हूँ, it's the same thing, right? Doesn't matter which way you do it, but if you do it this way, you get that C alpha to be 5 into 10 power minus 4. 5 10 power minus 4 मतलब कि 4 minus log 5, right? That is what pH is going to be. So pH is going to be 4 minus log 5, which is 4 minus log 5, which is 3.3. Excellent work, dost. Lovely. Who gave that answer? बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया. Hold on. कहाँ है chat? Chat कहाँ है? Okay, Suhani, what's up? Shlok, yes. Yes, Shlok. So you can find out alpha. You can do that. Or here is another way, right? You don't have to find out alpha. Last वाले में मैंने आपको सबसे बेसिक तरीके से कराने को बोला. अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि उसकी जरूरत नहीं है. Because if they're asking you for C alpha, सीधे C alpha निकाल लेते हैं. That's what we've done here. Cool? All right, lovely. Tejas, yeah, good job. सही है. But see, I've shown you two ways to do the same question. या तो आप पहले अल्फा निकालो, फिर C into alpha करो, और डायरेक्टली डू द C alpha थिंग. इससे भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं. ठीक है? Cool? All right, let's move on to the next question. एक मिनट. No, this is not a question. Oh, this was the question that I changed to get this. मैंने इसी का ऑप्शन निकाला था. I removed the options of this question. This is a question. Next one. Okay. हाँ, exactly श्लोक. 3 plus log 2 आया. हाँ यार, सेम है. वही जिस टाइप से करोगे उसका यूज करोगे. या एग्जैक्टली श्लोक. गुड जॉब. लवली लवली. ऑल राइट. बढ़िया. ग्रेट. 3.3. या एग्जैक्टली. Again, I've given you the same log values, ठीक है? Because I want you to not worry about the calculation, आप process focus करो. So I've changed questions so that they fit this narrative. If the hydrolysis constant of NH4Cl is some value, find the pH of 0.5 molar NH4Cl at equilibrium. चलिए इसको करते हैं.
स्टार्टिंग पॉइंट सबसे जरूरी है, द इक्वेशन दैट यू राइट, उसके बाद तो इट इज मैकेनिकल यार, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट, इट्स कंप्लीटली मैकेनिकल आफ्टर दैट. प्लीज ट्राई दिस वन आउट. हाइड्रोलिसिस होता क्या है, क्या बोला? डू यू नो व्हाट हाइड्रोलिसिस इज गाइस? लेट मी नो इफ यू नीड अ हिंट, otherwise I will wait. KH, hydrolysis. I have a question for you. इसका आंसर मैं ऑलरेडी दे चुका हूं. कौन सा आयन होगा हाइड्रोलाइज, जरा बताओ. NH4Cl है. Is it one ion that will get hydrolyzed, both ions that will get hydrolyzed, or what? Okay, what is a reaction? But कैसा reaction? What happens? What do you think? Weak base, strong acid. Okay, okay, okay. Chemical reaction breakdown. तेजस बहुत बढ़िया दे रहा है. NH4Cl and HCl. युवराज, उन दोनों में से दोनों होगा? Thanks, युवराज. But will both of that happen, युवराज? Or only one of those is going to happen? Tejas, definition is lovely, but थोड़ा लंबा है. If you keep it under 4 words, it's easy for me to read. Oh, 6 दो ही थे, with water लिखा था. ठीक है. Need a hint? Here is the hint. ये है reaction. The other one will not happen. Whatever. This one is not going to react. Okay, because you're saying this is going to happen. ये होने के chances नहीं है. Because look at this. Okay, here I've got a weak base, weak acid, very, very weak acid, and giving me very strong base, sorry, very strong acid and a very strong base. इसलिए reaction नहीं होगा. मैं आपको बोला था, मैंने आपको बताया था कि कोई भी reaction, whether it is organic, inorganic, it will happen to form a weaker base and a weaker acid. इसमें stronger base और stronger acid बन रहा है, इसलिए this reaction will not happen. See, ionic equilibrium is easy. Organic पूरा is doable just on this one concept. If you are forming a weaker base and a weaker acid, only then will the reaction happen. ठीक है? Okay. All right. All right. Shlok says 4.85. Okay. What do the rest of you think? ठीक है, वीक बेस का रिएक्शन नहीं होगा, एब्सोल्युटली. ये वाला रिएक्शन होगा. उसके बाद क्या करना है? नींद में बैठ के कर लो. सी अल्फा व्हाटएवर ऑल ऑफ दैट, के हो गया ये, सी अल्फा इज इक्वल टू दिस. सेम चीज है, एग्जैक्टली द सेम एज लास्ट टाइम. दिस क्वेश्चन इज द सेम क्वेश्चन एज लास्ट टाइम. नाउ आई फील आई शुड हैव आस्क्ड यू पीओएच. इस वाले में आई शुड हैव आस्क्ड यू पीओएच इंस्टेड ऑफ पीएच, ताकि थोड़ा तो एफर्ट लगाओ. करो करो करो, आई विल वेट. We'll go one step back, ताकि कुछ लोग जो है कर रहे हैं, करें आराम से ना. श्लोक, इट्स ओके, इट्स ओके. सही कर रहे हो तुम, सही डायरेक्शन में जा रहे हो. मैं आपको बता रहा हूं, स्पेशली इन आयोनिक इक्विलिब्रियम, द गोल ऑफ गेटिंग देयर फर्स्ट से ज्यादा जरूरी है द गोल ऑफ गेटिंग इट करेक्ट. क्योंकि व्हाट आई हैव सीन इन द पास्ट पेपर्स, काफी बार ये वाले न्यूमेरिकल एंट्री में आते हैं, और न्यूमेरिकल एंट्री में आपके पास चॉइस होता है 10 में से 5 चुनने का. इधर यू स्किप दिस, बट इफ यू स्किप क्वेश्चन लाइक दिस, तब होंगे सवाल कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से, इसके कितने आइसोमर है बताओ, या तो फिर होंगे ऑर्गेनिक के कितने आइसोमर है बताओ, या तो फिर होंगे इसमें से कितने सॉल्ट्स है एम्फोटेरिक, रैंडम स्टफ लाइक दैट. दैट कुड बी स्कैरी. मतलब उसमें याद रखना, अरे ये वाला है नहीं है, बट दिस इज गिविंग यू श्योर शॉर्ट मार्क्स. बट इफ यू आर बेटर एट दोस टॉपिक्स, स्किप, प्लीज स्किप, बट इट्स ओके. सो देखो, इसके बाद क्या कर रहे हो, सेम आइडिया, सी अल्फा होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस. So you get C alpha to be root 2 into 10 power minus 5. उसके बाद log लगाओ यार, क्या करना है? log लगाने में 5 minus something होगा, right? 5 minus log 2 by 2. So log 2 is 3.3 by 2 is 0.15. So 4.85 sounds about right to me. बिल्कुल सही लगता है मुझे, है ना? Which is this right here. 4.85. Good job, Shlok. Vivraj, good job, good job. Yeah, absolutely. ठीक है, आगे बढ़ा जाए. Number of students giving the answer has reduced, but that's okay, no problem. I don't mind it if you guys are not able to do this for whatever reason, but follow कैसे करना है.
I don't want you to depend on random equations like 7 plus half of pk minus. क्या यार, कौन करेगा ये सब बकवास? 7 plus half pk. By the way, do you know where that 7 plus half pk minus log c plus log c कहाँ से आता है? वो मालूम है? वो करते हैं नेक्स्ट. लेट्स डू दैट पार्ट नेक्स्ट. कौन से 11th के चैप्टर 12th में लगते हैं? तेजस 11th के चैप्टर डिपेंड्स ऑन व्हिच वन. किनेटिक्स में कुछ नहीं लगता है तेजस, बिसाइड मोल कॉन्सेप्ट, लिटिल बिट ऑफ गैसियस स्टेट. इलेक्ट्रो में सब लगते हैं, इलेक्ट्रो में लिटरली सब लगते हैं, और बाकी तो फिजिकल उन्होंने हटा ही दिया 12th से, तो योर चिल. यू मोस्ट वेलकम यूनिक भाई साहब. You know what else is free? Mock test. Unique, you have a very unique name. I know that joke has been cracked a lot. There was a very good engineer at Byju's called Unique Jain, so I know that could be a real name. That's a free mock test. Unique, since we're talking about good things that are free in life. Next question. Consider, ये थोड़ा आसान है. Consider an aqueous solution containing weak acid and strong base. This can act as an acidic buffer when what? Which of these four? बहुत सिंपल सा सवाल है. यस श्लोक, अल्फा को स्मॉल अज्यूम कर सकते हैं, KH एंड KW का रिलेशन लेके लॉग लेते हैं. बिल्कुल सही. अच्छा, यू टॉकिंग अबाउट दैट 7 वाला चीज. हाँ बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली श्लोक. विल डू दैट नेक्स्ट. इस ये वाला पहले कर लो. व्हाट हैपेंस व्हेन यू ट्राई एंड मेक अ एसिडिक बफर व्हेन यू हैव अ वीक एसिड एंड अ स्ट्रांग बेस? यू कैन 4 कंडीशंस. पहला कंडीशन है कि एसिड की कॉन्सेंट्रेशन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बेस. इसमें है कि एसिड इज इक्वल टू बेस. इसमें है ऑलवेज फॉर्म्ड. इसमें है एसिड इज लोअर देन बेस. ये वाला तो गलत है. एलिमिनेट कर दो. सी को एलिमिनेट करो प्लीज. बी व्हाटएवर, ये मेरे सर के ऊपर वाला, इसको एलिमिनेट करो. इट्स नॉट पॉसिबल राइट. अगर एसिड बेस से कम है तो इट्स गोना बी बेसिक पीएच एंड वो भी स्ट्रॉन्ग बेस. ये तो नहीं बनेगा बफर. बाकी ऑप्शन में व्हाट डू यू थिंक? एक एलिमिनेट हो गया. ऑलवेज फॉर्म बाय सी. ऑलवेज कैसे फॉर्म होगा? ऑलवेज कैसे फॉर्म होगा? वॉल्यूम ऑफ NaOH added इधर, pH इधर. Here I have CH3COH in the beaker. Drop by drop I will add. ये हो गया बफर वाला रीजन. फिर शार्प इंक्रीज and something like that, like an S-shaped thing. Equivalent point हो गया somewhere over here, right? And this pH, this is going to have NaA, which is strong base, weak acid, so pH must be greater than 7 at equivalence point. ये है बफर वाला रीजन. बफर में क्या होता है? You have A minus and HA, only then it forms buffer. अब इतनी कहानी बता दी, आंसर भी बता दो. Not sure, but you think it's A. Okay, Yuvraj says A. Shlok says A. Acetic acid is weak acid. Yes. Yes, Rick, lovely reasoning. B और D तो eliminated है क्योंकि, और C भी eliminated है. वही क्यों B C क्यों eliminated है? Because देखो C is this, ये NaA जो मैंने बताया, दूसरा कलर यूज करते हैं. this is C, this right here, right? यही है C. मतलब this is NaA and then A minus reacts with water to give you OH minus, खत्म, plus HA. मतलब this is going to be basic, है ना? दिस इज हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, इसलिए सी भी एलिमिनेट हो गया, तो डी भी एलिमिनेट हो गया, सब एलिमिनेट हो गया. आंसर मस्ट बी ए. यस, ब्यूटीफुल इजंट इट? ओ माय गॉड, आई एम वेरी ब्लरी. वी विल फिक्स दैट इन अ मोमेंट्स टाइम एंड हियर वी गो. है ना? ठीक है. सेरिफर दिस इज नॉट द केस ना. सी देखो, आई हैव शोन टू यू इन दिस ग्राफ दैट इट इज नॉट पॉसिबल दैट हमेशा दे विल फॉर्म अ बफर, राइट? This pH curve is showing you that the pH changes. अगर pH बदल रहा है, it's not always. So the buffer part is only in this. यहाँ पे है buffer. Only here is there buffer, which is this case, where you have a lot more acid than the base, which is option A. If concentration is equal, Henderson-Hasselbalch equation no use. That's obviously incorrect. Yes, good job. जैसा आप लोग figure out करो, good job, good job. मजा आ रहा है, right? It's not that hard. Ionic. मैं अब बता रहा टाइट्रेशन में, एंड अगला ही सवाल आ गया. जो भी टाइट्रेशन आपको दिखाया मैंने, एग्जैक्टली उसी पे सवाल है. A 50 ml solution of 0.2 m HCl is titrated against 0.2 molar NaOH. Find the pH of the solution when 50 ml of NaOH is added. ट्राई करो इसको, ट्राई कर सकते हैं. गुड जॉब युवराज, सारे सवाल सही होंगे.
ब्रो यू सिट विद मी, एक सवाल गलत नहीं होगा तुम्हारा लाइफ में. आई एम गिविंग यू दैट गारंटी. आई एम नॉट कॉन्फिडेंट बिकॉज आई एम टीचिंग यू, आई एम कॉन्फिडेंट बिकॉज ऑफ व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल बुक which is really heavy. Should I pick it up? I'm not going to pick it up. Let's pick it up. I really hope I don't sprain my neck. Ah, Zoomdal. It's all from here. All from Zoomdal. So I'm sure there's no way of getting an Ionic question wrong. कोई chance नहीं है. कोई भी throw any question. दुनिया कोई भी सवाल ले दो, we will solve because we are sure about how to solve. खैर ये वाला करते हैं. Let's do this one. I'll write down the equation. Right? ये होगा. Initial final डालो उसमें calculate करो. Yeah, let's try this. Let's try this question. I gave you a starting point. और hint चाहिए तो chat में बताओ hint and I'll give you more of a hint. If you are sorted with this, then बढ़िया बात है. But hint चाहिए तो मांग लो, कोई टेंशन नहीं है. Let me know. What do you think? NCERT lab manual available in hard copy. Not sure, bro. In school maybe. आप लोग के पास हार्ड कॉपी है क्या? कोई स्टूडेंट टेलीग्राम पे पूछ रहा था. Do you have a hard copy of the NCERT lab manual? Okay, good. That's good to know, Dilip. Lovely. Can we solve this question, guys? और hint चाहिए? You want a hint, Dilip? Okay. The next step is initial moles कितने थे? I'm talking about moles, yeah, not molarity. I'm talking about moles right now. Moles is what? 50 into 0.2 CH3COH, यानी कि HA is CH3COH and ये है A minus यानी कि CH3COO minus. ठीक है? So initial moles थे मेरे 50 into 0.2, 50 into 0.2. ये इसके भी 50 into 0.2 आ गए. मतलब कि फाइनली दोनों गायब और बचा सिर्फ Na माइनस. Na मतलब कि प्रैक्टिकली Na प्लस, A माइनस. ये अलग अलग है. हाइड्रेटेड आयंस हैं, दे वेरी फार अपार्ट. सिंस दे वेरी फार अपार्ट दे हाइड्रेटेड आयंस, तो पानी के साथ तो भाई साहब कर जाएंगे रिएक्ट. A माइनस कर जाएगा रिएक्ट. पीसीएम का है. ओके ग्रेट. सो व्हाट इज नेक्स्ट गाइस? एनी आइडिया आगे क्या होगा? ये आप लोग सॉल्व कर रहे हो क्या? व्हाट्स हैपनिंग? व्हाट इज हैपनिंग? हाइड्रोलिसिस होगा, है ना? लास्ट टाइम हमने डिसाइड किया था हाइड्रोलिसिस होने के चांसेस हैं. यहां होगा हाइड्रोलिसिस, है ना? सो यू डू A minus plus this water gives you both of these. I don't know their concentrations. I'll keep them as whatever. ठीक है? I'm doing this for first principles. Oh, okay. समझ गए. That's good, Dilip. Lovely. So whatever this K is, it's supposed to be hydrolysis, but I'm not talking about that. I will not call it that. We'll do this without worrying about all of that. You do this. You write it down like this. Now, out of this, I know this, I do not know this, I do not know this. तो उसको कैसे निकालोगे? देखो, if I take just the acid in this, yeah, if I take the acid dissociation, मतलब कि HA giving me H plus plus A minus, then उसका Ka is this, and इसका conjugate क्या होगा? ये A minus is the conjugate base. उसका क्या होगा? Kb will be this value right here, Kw by K. Why? Because this is a conjugate acid base pair. So we use that concept to get this. And look at this. Look at this. यहाँ पे और यहाँ पे same चीज आ गई है. So you just substitute. This K is the same as Kw by Ka. And we will say कि ठीक है, इन दोनों की concentration same ही होने वाली है. Right? Just like we do C alpha, C alpha. This is just that. ठीक है? But right now I'm just leaving it as OH minus whole square by A minus. Are you okay so far? Yeah, I don't want to go on a monologue. यहां तक समझ में आया? Or is it? This is the derivation of the hydrolysis thing. NCERT में नहीं है, but that's okay. When has that ever stopped us? Yeah. Are you okay so far? Yeah. How is it that I wrote बिल्कुल कोने वाली equation जो है इस तरफ, बिल्कुल कोने में, right? How did I write that? Because these guys are a conjugate acid base pair. ये दोनों conjugate acid base pair हैं. इसीलिए
इसका Ka है, तो this Kb will be Kw by Ka, which is I have written that here. मतलब मैंने substitute किया है. Okay, Shlok says 8.37. Okay, good job. Let's see. Once you do this part, POH is pKw minus pKa minus log of A minus divided by 2. Why by 2? Because I have OH minus whole square यहाँ पे. Take negative log everywhere, you get this. This, by the way, is that expression. Okay, and pH is going to be 14 minus POH. इसीलिए यहाँ पे आता है 7, इसलिए आता है हाफ, इसलिए आता है ये पूरे इक्वेशन. ठीक है? ओके, कूल. यस, नो, मे बी, बताइए, समझ में आ रहा है? Where do you get that 7 plus 7 minus वाला equation is from here. So, and if you want to mug, अगर mug करना भी है तो ऐसे करो mug. ठीक है? It is going to be pk this thing blah 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 whole thing divided by 2. इसलिए अब नेगेटिव यहाँ पे लगा दो तो देखो pkw by 2 minus pka plus log c by 2. pkw by 2 is 7. यही तो है यार. This is what it is. And then you mug for POH and उसका उल्टा यहाँ पे निकालो, है ना? This is the derivation. अब आंसर क्या हुआ? क्या फर्क पड़ता है आंसर क्या हुआ? समझ में आया कि नहीं है? Do you follow this process? Guys, कोई डाउट है तो पूछ लो. We don't have too much time left and it's okay. I have 3-4 more questions for you, but that doesn't matter. ये सबसे जरूरी है कि you understand how this hydrolysis business works. Maybe हम लोग एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, वो KSP वाला, है ना? And we'll wrap it up. I have 3-4 more, but because time कम है, I'll give you the KSP वाला सवाल इसके बाद. Is this okay, guys? Any doubts here? आंसर क्या होगा देख लेते हैं. This will be 7 plus half of log 10 by 100, मतलब -1 हो गया ना ये तो. 3.74 मतलब होगा 1.87. So 8.87. Is that what you got? Yes, Yuvraj? All right, beautiful. Good job, focused. Awesome. Lovely. We are done. Yeah. 8.37 आया था आपका. मेरा 87 आया क्या? What did I do wrong? Did I do something wrong? You got a mistake? Okay, cool. I think वो minus plus का हो गया होगा, है ना? ठीक है. Cool. Rek is also getting 37. I think it is 87. I know what you did. ये plus minus का चक्कर है क्या इधर? We can put it on a calculator अगर ये अजीब लग रहा है तो. Let me see. Negative log of this, negative log of this. अच्छा, इधर plus हो जाएगा. Okay, I get what you're saying. No, good job, Rek. I think it's 8.37. I think I made an error here because, hold on, let me just think that one through. ये Ka नीचे चला गया, Pka मतलब negative log of Ka. नहीं, ये सही यार, negative ही लग रहा है. It looks okay to me, guys. If there's a different formula, please let me know. C term में गलती है, concentration मतलब you're saying this should be plus, not minus. Hold on, let me just check that quickly. Let's take this negative log यहाँ पे ठीक से करके कर देते हैं. ठीक है. If you take negative log of this whole thing, you get minus 2 log of OH minus equal to minus log of Kw plus log of Ka and negative log लिया था ना. This is fine. Minus log of this whole thing यहाँ कर देते हैं minus. Oops, hold on. Kw minus Ka यहाँ पे हो गया. ठीक है. And this goes on top. So this also will be log A. तो माइनस यहाँ पे तो ठीक लग रहा है. माइनस log W is pKw plus log A is minus pKa minus 2 log is minus 2, not minus, it will be 2 POH. Hey, this looks okay to me, guys. Minus log A. A minus क्या था value? A minus is 50 into 0.2, which is simply going to be एक 0 यहाँ पे हटा दो. 2 into 5 is 10. There is no 100 here, you're saying. नीचे 100 नहीं. That's what you're saying, right? Okay. Oh, okay, cool. So this 100 should not be there. It should just be log 10. I think the reason I did that is because this is millimoles. What I have here is millimoles. Okay. इसलिए मैंने यहाँ पे किया. Cool. Let's move on. आप प्लीज को चेक कर लेना. AI, प्रणाम. Okay. You're from NEET, aren't you? AI. But good job here. So just check the calculation. The reason why I have done that is because ये millimole है, ठीक है? तो इसलिए concentration terms would be like, you need to add
ये 100 डिनोमिनेटर में इसलिए क्योंकि यू हैव 50 ml एंड 50 ml एडिंग अप. ओके, सो न्यूमरेटर में यू हैव हाउ मच, यू हैव 10 millimole divided by 100 ml. Rick, that's why this 10 by 100 here. So I feel it's okay, but check कर लेना. I think it is okay. I feel it is okay, but हो सकता है गलती हो सकती है. I think it is okay. Yeah, Rick, अगर ping me on Discord or something, you have any doubts. I feel this is done. Denominator में you have to divide by 100 because the concentration है exactly as Shlok pointed out. 100 ml is 50 and 50 together, and mole is 10 millimole. तो सही लग रहा है मुझे, but अगर आपको डाउट है तो आप देख लेना. It's okay यार, गलत भी हो सकता है. You check and ping me if you have any doubts. I feel right now that the answer is 8.87. Let's move on. लास्ट सवाल एक करते हैं हम लोग केएसपी वाला. केएसपी वाला कौन सा करें? केएसपी वाला कौन सा करें? ठीक है, लेट अस डू, ठीक है ये वाला करते हैं. लेट्स डू दिस क्वेश्चन. H2S gas is passed through a decimolar solution of Mn2 plus containing 0.01 molar H plus ions. Neglect hydrolysis of H2 minus ions. Which of the following statements is correct? KSP वैल्यू दी गई है MNS की, H2S का वैल्यू यहां पे दिया हुआ है Ka, and H2S का concentration दिया हुआ है. So what you are doing, by the way, this is salt analysis ही है, ठीक है? This is exactly salt analysis. I'm giving you a hint. Okay, Mn2 plus का detection exactly ऐसे होता है. The buff colored precipitate you get, but that is only if you have sufficient H2 minus. So check it out. Try करो. Try करो. Jasbir, I think you were there yesterday also on our longer thing that we did. It depends on you, Jasbir bhai sahab. I remember, I think आप कल वाले session में भी आए थे, शाम वाले session में we were doing this. I saw your comments there. Dude, it depends completely on you, yaar, Jasbir. Can you do it? It depends on you. I saying yes or no, yes to give will give you a lot of confidence. Saying no will demotivate you. But I think the right answer is it depends on what you do from here. And by saying depends on you, I don't mean कि आप पे pressure है कि you have to do this. आप figure out करो ना. आप कर सकते हो तो करो. Yeah, we are here to support you. Either way, we are here to guide you in the right direction. Now it's up to you. आप उसका कितना use करना चाहते हैं ना. But stick around on this channel and it'll help for sure. Whatever your goal is. How do you do a question like this? क्या हो रहा है यहाँ पे? H2S is giving me some sort of, ये भाई साहब निकल रहे हैं, right? It's giving me H plus and S2 minus. And this also is happening. Now, because there are some sort of a common ion, there is going to be a suppression of this and the reaction is going to go backward. Reaction goes backward मतलब precipitate होने के chances हैं. Okay, it could precipitate, right? Because this right here is solid, ये दोनों है aqueous. So if there is sufficient S2 minus coming from here, then it will precipitate. What does sufficient mean? You compare with the KSP value. क्या करना है? Let's write down what is given to us. H2S is 0.1 molar. H plus is 0.01. मतलब कि acidic condition है. अरे बाप रे. Acidic condition मतलब कि ये further और छोटा हो जाएगा. मतलब S2 minus is going to reduce significantly. ठीक है? And I already have Mn2 plus का कहां से हम, अच्छा ये भी लिखा है, decimolar solution of Mn2 plus, इसलिए 0.1 लिखा है. ओके, बीच में अटक गया, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. यू वुड स्किप दिस, इट्स ओके युवराज, नो टेंशन, नो टेंशन. बट दिस इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड. ओके, आई विल टीच यू हाउ टू डू इट. ये आर यू फाइन सो फार? मैंने जो लिखा है, गिव मी अ थम्स अप, ओके और व्हाटएवर. आई हैव जस्ट रिटन डाउन सवाल में लिखा क्या है, मैंने कुछ दिमाग नहीं लगाया. I don't know if the reaction is going to go forward or backward, but trust the maths. If it is going the other way, तुमको जो है indication मिल जाएगा. If you do some dissociation all that, वो negative value आ जाएगी. Trust the maths. This is fine. I have just assumed both these reactions go forward. उसका मैंने सब लिख लिया अभी. No problem, युवराज, कोई टेंशन नहीं है. Are you okay with this? युवराज, Shlok, everybody else who's following, this is okay. Just give me a thumbs up. This is fine. Now from this Ka of this acid right here, from this Ka, I can get S2 minus that should be there from here, right? What is this value? I can get from Ka. Why? How do I get this? Ka is going to be equal to S2 minus times 0.01 divided by 0.1. है ना? Take it to the other side. So S2 minus, ये Ka है,
ये 0.1 है विच इज डेसीमोलर, नॉट डेसीमोलर, छोड़ो, 0.01 यहां पे था वो नीचे चला गया, ठीक है, दैट्स ऑल आई हैव डन. नाउ इफ आई डू दिस व्हाट डू आई गेट, क्या मिला, right? Just take it to the other side and I get S2 minus concentration to be this value right here. So far so good. Aman says A correct. Okay Aman, cool. Thank you Aman for your answer. Now अगर इतनी S2 minus concentration है, is this sufficient to precipitate decimolar solution of Mn2 plus? Is this sufficient or not? यहां से बता सकते हो तुम लोग. I have calculated S2 minus a concentration. Can you tell me from here? 0.01 स्क्वायर है, या स्क्वायर है ना यहाँ पे, ओके, आई थिंक इस वाले में मैंने नहीं लिखा था, यू आर राइट, 0.01 स्क्वायर होगा, करेक्ट, आई हैव फिक्स्ड इट ओवर हियर, या एब्सोल्युटली श्लोक, 0.01 स्क्वायर होगा, लेट मी फिक्स इट इन द बैक एंड आल्सो. कैन यू टेल मी फ्रॉम हियर, कैन यू फिगर इट आउट, विल दिस प्रेसिपिटेट आउट और नॉट? थैंक्स फॉर दैट, थैंक यू. एंड whoops, yeah, this should be a square over here, right? लिख दिया मैंने, cool, okay. Is this going to precipitate not from here? Shlok, yes we can, okay, rect, try karo. So from here I get S2 minus to be 1.1 10 power minus 18. What is Q solubility product? Is going to be S2 minus into Mn2 plus, which is this into 0.1, which is 1.1 in 10 power minus 19. Since this value is much smaller than KSP, precipitate nahi hoga, ठीक है? Does not, exactly Shlok, exactly. It does not precipitate because Q is less than KSP. That's all. ठीक है? Now this tells you practically, अगर आपको लैब में करना हुआ आप कैसे, so if you're wondering कि qualitative analysis में कैसे काम करेगा, now qualitative analysis from this whole setup, देखो आप मैथ्स निकाल के दे सकते हो कि यार इतने में तो नहीं करेगा, मुझे बढ़ाना पड़ेगा, मुझे या तो एसिडिक पीएच बढ़ाना पड़ेगा, आई हैव टू रिमूव इट, आई डोंट वांट एसिडिक पीएच, या तो ये हटा दो, H+ आयन हटा दो, देन मे बी इट प्रेसिपिटेट आउट इजीली, बट बिकॉज आई हैव एडेड दिस सप्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है, इट जस्ट फॉल्स क्रेजीली बिकॉज आई पुट H+ आयन ओवर हियर, ठीक है, इट्स जस्ट मैथ्स, आई विल नॉट से सिंपल मैथ्स, बट इट्स जस्ट मैथ्स, ठीक है, इट वाजंट दैट डिफिकल्ट, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है. चलो, आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ योर टाइम, एक लास्ट छोटा सवाल कर लें क्या? आई थिंक आई हैव अनदर सेशन एट 3 o'clock, राइट? एक लास्ट छोटा सवाल करके देन विल रन अवे, वो भी केएसपी के अराउंड है, वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, बट इस टाइप का सवाल जेई में आने के काफी चांसेस हैं. Solubility of sparingly soluble salt X2Y is some value. The KSP value of salt is m into 10 power minus, find the value of m plus n. This is very likely to come in JEE. इस टाइप का सवाल मैंने जो पिछले सवाल किए उसके जेई में आने के चांसेस कम है, उससे आसान सवाल ही आएंगे, इस टाइप सवाल आने के चांसेस हैं. ट्राई आउट, लास्ट वाला कर लो, हाँ, कूल, यस श्लोक, एब्सोल्युटली. इसीलिए श्लोक यू डू अमोनियाकल सॉल्यूशन में Mn2 प्लस होता है प्रेसिपिटेट, क्योंकि अमोनियाकल सॉल्यूशन में बेसिक मीडियम हो जाता है. एग्जैक्टली श्लोक, एग्जैक्टली. कैटायन एनालिसिस में यू डू अमोनियाकल सॉल्यूशन. आई डन दिस फ्रेश इन माय मेमोरी when we did the whole practical chemistry, that's when we had covered this. Yeah, last वाला इसको कर लो. $50 is the answer. देखते हैं, बढ़िया, आपने जल्दी कर लिया. How do you solve this? X2y gives you 2x plus y2 minus. मतलब KSP is simply going to be 4s square into s, है ना, मतलब 2s the whole square times s. तो 4s क्यूब होना चाहिए, will be equal to KSP, है ना. s क्या है? s is simply 2 into 10 power minus 6. So this is going to be 32 into 10 power minus 18 और 3 into 10 power minus 17. 50 आया तुम लोग का? 50 कैसे आया यार? Did I mess something up? Bro, it's going to be cube, right? So 18 के आसपास होना चाहिए, right? Like somewhere in the ballpark of 18. Yeah, 50 कैसे भाई? I'm on the similar frequency. दो लोग को 50 है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कैसे यार 50 कैसे आएगा यार? 6 into 10 और यार 50 तब आएगा अगर तुम्हारा कुछ 8 टाइम्स हो ये. आई डोंट नो 50 कैसे आएगा.
युवराज व्हाट? अरे सवाल तो पढ़ लो. All right, that's good. Yeah. 5 hour में पूछते थे. That's good to know, Shlok. Lovely. Oh, bro, Shlok. Okay. All right. I see what you did, Shlok. I see what you did. Okay, sure. Maybe this question should have been framed better. My bad. Sure. 50 कैसे आया? I get what you're saying. You're saying 32 into 10 power minus 18. तो 32 and 18 हो गया 50. ठीक है यार. Grace marks for this question. ठीक है. नहीं. I got how you guys are getting 50. ठीक है. Never mind. ठीक है. 50 or this was a funny experience. Or 20. I would go incline more towards 20. Right? देखो, I'll tell you why it is 20 more than 50 because I've written 10 power minus n, right? अगर मैंने 10 लिखा है, you remember the units and dimensions chapter में, वो 10 power वाला, it doesn't matter. Like 32 and 3.2 is the same in terms of significant figures. Significant figures 3.2 और 32 के same है. So 3.2 into 10 power minus 18 versus 32 into 10 power minus 17 or the other way around. So 3.2 10 power minus 17 and 32 10 power minus 18 is the same number. But because मैंने ऐसे लिखा है, it is better to write it in this format. ठीक है. I really hope ऐसा सवाल जेई में ना आए, नहीं तो तुम लोग बहुत गाली दोगे जेई को. अभी तो maybe already मुझे गाली दे रहे हो. But yeah, cool. That was a fun question to end it up with. Yeah, 20.2 or whatever. Sure. ठीक है. All right, 50 also works. Thank you so much. This was fun. Thank you for sticking around. Since you guys like homework questions, here is a homework question for you. कहाँ गया ये वाला सवाल? Here is your homework question. ओके. लॉग की वैल्यूज यहाँ पे दी हैं. कमेंट्स में बता दो, टेलीग्राम बता दो, जहां बताना बता दो. ठीक है. कूल. इट्स ओके. गुड जॉब एवरीबॉडी. चलो. Yeah, by the way guys, mock test it's completely free. Yeah. Oh god, I'm not. Oh thank god, I can move myself. I wasn't practically doing that. Mock test, I'll go on right to the end. You know the deal. Go to this link right here. कहाँ है लिंक? इतने ढेर सारे लिंक्स, इतना कम टाइम. That's the free test, and shop.byju's.com is for the paid series, which is 15th to 19th Jan. It'll really help us out if you participate and bring you more awesome content like this. Free वाला test तो definitely लो यार. I don't understand why you would not do it. It's literally the best test in India right now because we have so many students and we have so many awesome teachers making these questions. Mock test कर लो अगर नहीं साइन अप किया है तो. अगर if you're not confident, if अगर आप 11th में हो तब भी आप दे सकते हो. It's cool. Do the test so that you get a feel of how to give the paper on an online environment with thousands of students. Not thousands, tens of thousands of students. Jan 7th को हो रहा है ये. And yeah, it'll be fun. ठीक है. All right. See you. Awesome. मिलते हैं हम लोग Saturday. All right. What are we doing on Saturday, by the way? Hold on. Let's go back and see. Saturday को क्या करने वाले थे? Saturday को कर रहे हैं coordination compounds. अरे यार, let me move on to the other side before I sign out. Oh, अब काम कर रहा है ये. I don't have to slide over like moonwalk and stuff. Coordination chemistry on 12th. On 6th Jan. I'll see you on Saturday. Have a good one. Oh, 3 बजे भूमिका जी की क्लास है. Do attend it. Mock test, JEE, etc. Check it all out. Oh, if you're wondering what the whole JEE thing is about, that's right here. Bye. See you all. Thank you so much for attending. Tata.